Okay, ma'am. Yes, Abdul, Ayan, are you doing it? Yes. Ayan, yes, Ayan. Are you solving questions by yourself also? Yes, ma'am. Okay, see, you have, like you all have so much of potential, but that you will only be able to give your best when you are practicing. Okay, even if your mind is very sharp, you are understanding everything, you are throughout, like till in the previous class you have scored very well, but you need to practice over here maths. And this time you can see previously you were having only the book which you need to practice. Okay, and mostly you will be getting not the same then the same type of question, but here the like whatever syllabus you are having, you need to understand the concepts from here, and like so many questions you have to solve. Any from anywhere you are getting the question, just sit and try solving it. If you are able to solve it, great. If you can't, please tell me, I'll be helping you. Okay, that zeal must be there inside you. Okay, let's start. Okay, let's discuss on it. So the converse of basic proportionality theorem, we have still not discussed that. I told you I'll be explaining you the theorem first, what, how we'll be proving the theorem. Okay, and then we will start solving the question, like all the questions from exercise we'll be discussing it over. So the converse of basic proportionality theorem says that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel. This is converse of basic proportionality theorem. You already know this theorem. Today we are going to prove it. Okay, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. It is given over here. It is given over here that if a line, okay, let's try understanding it. First, I'm showing you the step, the way we were discussing the previous one. Let's try understanding it. Then, like properly, we'll be proving it also. This one is very simple. Okay. So what does it says? It says that if a line divide any two sides of a triangle in the same ratio. Suppose we are having a line. Okay, a DE line we are having, which is dividing the side AB and AC in the same ratio. We know that. Okay, we know, or it is given over here, or it is given that this is G. It is given over there that the ratios are same, that is AD by BD
Okay, that is equals to AE by EC. The ratio is same. It is given over here. If a line divide any two side of a triangle in the same ratio, then what we have to prove? We have to prove over here. We have to show that this line DE must be parallel. We have to prove that DE must be parallel to BC. If the ratio is same, then the lines are parallel. Previously, we have proved if the lines are parallel, then the ratio will be same. And there we have given a lot of effort. We have taken this triangle, that triangle, so many triangles. We were finding the ratio, we were comparing the area of the triangle, and then we ended up proving that yeah, the ratio will be same. Here it will be really simple. Okay, here the ratio given same, and we have to say that these two lines are parallel. Okay, let's think about it. Let's think about it. Suppose we are saying we will be using the method of contradiction. Okay, what we will be saying that okay, okay, this DE is not parallel. This ratio is same we are having in hand. Okay, DE is parallel to BC, we have to show. We will be saying okay, let's say that DE is not parallel. A line we are having, that is DE dash, that is parallel to BC. Okay, contradictory method we are using. Whatever we have to prove, that will be taking that okay, let's assume that this is not parallel. Another line is parallel. Another line DE dash, that is parallel to BC, that we are assuming it first, and then at last we will be saying that our assumption is completely baseless and all. Okay, so the contradiction we are assuming at first. After that, what we will do, we will say that since DE dash, we are having a triangle in which DE dash is parallel to BC, then by basic proportionality theorem, then by basic proportionality theorem, since this is parallel, then we can write a ratio. Two ratios are equal. Which two ratio? We can write that AD by BD is equals to AE dash by E dash C. AE dash by E dash C. Now I am taking a pause and I am asking you, is it making sense to you? Are you getting it? What I am talking about? I did Yes, not Are you ma'am. getting understand. it? Let me explain it from the beginning. हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये दोनों साइड जो है इनका रेशियो सेम है, और क्या हमें प्रूफ करना है, ये जो लाइन है डीई ये बीसी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। एक हम क्या यूज करने जा रहे हैं, हम एक कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड यूज करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड का मतलब होता है जो हमें प्रूफ करना है उसका डायरेक्टली अपोजिट कोई सिनेरियो हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्योंकि प्रूफ करना है डीई एंड बीसी पैरेलल है, तो हम यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड that DE is not parallel to BC. DE is not parallel to BC. There is a random line, another line DE dash, which is parallel to BC. We are having a triangle. We are having a triangle ABC. It was given to us that AD by BD is equals to AE by EC. It was given to us. Whatever we have to prove, whatever we have to do, at first we are taking that let's assume that DE dash, another line is there which is parallel to BC. Okay, if DE dash is parallel to BC in a triangle, then can we use basic proportionality theorem over here? Forget about this story. Forget about all the story. If you are having a triangle, just focus here. If you are having a triangle where DE dash is parallel to BC, can we use basic proportionality theorem? Yes or no? Yes, ma'am. We can use basic proportionality theorem. Okay, we can use basic proportionality theorem if we are having a triangle where just a D is there, a E dash is there, DE dash is parallel to BC, then we can use basic proportionality theorem and we can say that AD by BD is equals to AE dash by E dash C.
So far, is it making sense to all of you? Yes or no? Yes. Okay. हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट एक अजम्पशन लिया और अजम्पशन के बेसिस पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज किया, दैट्स इट। हमने खुद से एक अजम्पशन लिया है कि चलो एक लाइन है जो कि रैंडम लाइन है डी ई डैश, वो बीसी के पैरेलल है, और क्योंकि हमने ऐसा अजम्पशन लिया तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर पा रहे हैं, और हमने अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दिया अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा ही होगा बाय बीपीटी थ्योरम और बाय थेल्स थ्योरम। प्लीज डोंट राइट बीपीटी थ्योरम एनीवेयर, राइट इट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो इज इट क्लियर सो फार कि हमने क्या अजम्पशन लिया और क्यों हमने ये लिखा है? इतना क्लियर है सबको? आया ना? Yes. Yes, ओके, ma'am. अब हमारे पास गिवन कोई एक गिवन पार्ट था जो कि ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी के इक्वल था, ये हमें गिवन था। ओके, ये क्यों है, ये क्या है, जो भी है ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो थ्योरम है वहां से हमें ये गिवन है ऑलरेडी, तो ये तो है ही हमारे पास इक्वेशन वन, और अभी अभी हमारे अजम्पशन से हमने जो लिखा है उसे इक्वेशन टू। अगर हम इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करें तो क्या हम कुछ बता पा रहे हैं? आया ना? इक्वेशन वन एंड टू को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या हम अभी के लिए, मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि क्या हम अभी के लिए ये लिख सकते हैं कि ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी? इतना, सिर्फ इतना लिख सकते हैं, कोई लॉजिक मैं नहीं दे रही हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ मैं, बस ये दो इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, और क्या कंपेयर करने के बाद हम लिख सकते हैं AE by EC is equals to AE dash by E dash C? Yes or no? Yes, Yes. ma'am. We can write it Ma'am, why because the have you left. taken only E dash Yes. instead of any other alphabet? You can take any other alphabet. If you don't want to take E dash, you can take. E dash is just the another name. Aisha. E dash के place पे M N M O कुछ भी ले सकते हैं. Okay, it doesn't matter. E dash Okay. एक new name हमने दिया है बस. Okay, M भी ले सकते हैं, N भी ले सकते हैं. It doesn't matter. Okay. Yes. तो क्या हम ये लिख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन को जस्ट कंपेयर करके? आया ना? लिख पा रहे, राइट? हमारे पास एक गिवन इक्वेशन था, वो हमारे पास ऑलरेडी था, और हमने खुद से एक अजम्पशन लिया कि चलो एक रैंडम सा लाइन है, नॉर्मल दूसरा कोई लाइन है डी ई डैश, वो पैरेलल है बेसिक के। जैसे ही हमने ये अजम्पशन लिया वैसे ही हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करके एक कंडीशन लिख पा रहे हैं, और अब पहले वाला जो गिवन कंडीशन है और जो अभी हमें हमारे अजम्पशन से मिला, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ और हमें मिल रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या मिला हमें? ए ई बाई ई सी, हमें मिला ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश। आयशा ने पूछा ई डैश क्यों ले रहे हैं, कोई और पॉइंट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, ओके, कुछ कोई भी अदर अल्फाबेट वी कैन टेक ओवर, ओके। ई डैश, ये हमें इक्वेशन वन एंड टू से बाय कंपेयरिंग मिला, ओके। व्हेन वी कंपेयर्ड दिस टू इक्वेशन वी एंडेड अप गेटिंग दिस। अभी मैंने कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया, जस्ट हमने इक्वेशन को कंपेयर किया और हमारे पास ये मिला। अब अगर ये जो न्यू इक्वेशन हमें मिला है, न्यू कंडीशन हमें जो मिला है, इसमें दोनों साइड इफ वी विल बी एडिंग वन, then let's see what we will be getting. Okay, we are going to add one on both sides, adding one on both sides. Now mathematically adding one on both side, two on both side, same number on both side is acceptable. Please think about it. You are having a equation and in that equation you are adding same number on both side, and it is completely logically acceptable in mathematics. Okay, if you are having a seesaw, it is in equilibrium, here 50 kg, there 50 kg, if you are adding 2 kg on both the side, still it will be in equilibrium. इक्वेशन भी कुछ ऐसा ही होता है,
अब हमारे पास दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर हम वन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दे और वन राइट हैंड साइड में ऐड कर दे, तो हमारे इक्वेशन के इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इट इज कंप्लीटली अलाउड। सो एडिंग वन ऑन बोथ साइड। नाउ क्यों हम वन ऐड कर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगी क्यों ऐड कर रहे हैं। ओके, ए ई बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। चलो ई डैश के प्लेस पे एम एन ओ जो भी कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। ई डैश कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, चलो ई डैश के प्लेस पे एम ले लेते हैं। ओके, ये ई डैश, ये जो पॉइंट हमने ले रखा है असम्पशन में, इसे एम कहते हैं कि ये एम। ओके, let's say this is n, just for your understanding. Okay, we don't want to take e dash. This is n. Let's continue. So this is what we are getting, a by ec plus 1 and whatever we were having plus 1. Now we have to do the addition. Can you tell me, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? ec, right? Yes. Okay, in the numerator what we will be having? AE plus E. a plus ec. Is it everyone getting this step? Alvina, Abdul, Ayan, are you getting it? How we have written this step? Yes. Yes. Yes, ma'am. Alvina, are you getting? Yes. Abdul, are you getting, Abdul? Yes. Okay. Now on the next, the other side, MC will be the LCM. In the numerator, what we'll be having? Who will say? AM plus MC. AM plus MC. Okay. Let's see the figure carefully. I'm drawing the figure above. Again, the same figure. ABCB we are having. DE was there. We have taken DM. Okay. DM we have taken. E dash we have taken initially, but even if we will be taking any other alphabet, that will work. That's what I said. Now ध्यान से देखो, AE plus EC क्या है? अगर AE plus EC को ऐड करेंगे तो क्या हम AC लिख सकते हैं? आया ना? Yes or no? ध्यान से ट्रायंगल को देखो, AE plus EC का मतलब AC है. Yes or no? Yes, ma'am. And the denominator as it is. Now AM plus MC. ध्यान से देखो और बताओ AM plus MC क्या है? अगेन AC है. Yes or no? Yes or no? AM and MC को ऐड करेंगे तो अगेन AC मिलेगा. डेनोमिनेटर में क्या है? MC. अब ध्यान से इस फ्रैक्शन को देखो, दोनों फ्रैक्शंस, दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है और दोनों का न्यूमरेटर इज ऑलरेडी सेम. तो क्या हम कह सकते हैं कि डेनोमिनेटर भी सेम ही होगा? कैन वी से दैट? क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन है. अगर न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है तो डेनोमिनेटर भी सेम होना ही चाहिए, तभी जाके ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होंगे. यस और नो? मैथमेटिकली, लॉजिकली तो यही लॉजिक है कि अगर न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, ओके, अगर न्यूमरेटर डिफरेंट होता तो शायद हम ये नहीं बोल पाते. ओके, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, चलो मैं कहती हूँ 5 बाई लेट्स से 7 है, ओके, इज इक्वल्स टू 15 by 21. See, these two fractions are same. क्या ये हमें दिख रहा है कि अदर साइड, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है? ओके, यहाँ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दिख तो डिफरेंट नंबर्स है. But 15 that is because when we divide, we get 5 by 7. But in this If- case, AC by MC, how are we going to divide? Wait, no.
when we'll divide we'll be getting the same fraction. न्यूमरेटर वाला डिफरेंट है तो डेनोमिनेटर डिफरेंट हो सकता है, ओके होगा ही होगा. बट अगर न्यूमरेटर ही सेम है 5/8 मैं बोलूं तो क्या ये वैलिड है? मैथमेटिकली लॉजिकली ये वैलिड है? ये न्यूमरेटर सेम है लेकिन डेनोमिनेटर सेम नहीं है. ऐसे दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो सकते हैं? ये कंप्लीटली इनवैलिड इक्वेशन मैंने कंडीशन लिख दिया यहाँ पे. 5/7 इज इक्वल टू 5/8. अगर न्यूमरेटर आपस में सेम है तो डेनोमिनेटर को सेम होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये इक्वलिटी साइन वैलिड होगा. अगर न्यूमरेटर सेम है और डेनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिख रहा है तो मैथमेटिकली इसे हम इनवैलिड बोलते हैं. इनवैलिड का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिख दूं कि 2 इज बिगर देन 8, ये कंप्लीटली फॉल्स है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है मैथमेटिक्स में. 2 एक ऐसा नंबर है जो 8 से छोटा है, बड़ा नहीं है. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. Yes, ओके, ma'am. इट इज कंप्लीटली इनवैलिड. दिस इज इनवैलिड. कभी भी मैथ्स में अगर 2 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलना कि हमने कुछ गलती कर रखा है, लेट्स गो एंड चेक इट. जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करते हैं कभी भी कि सोल्यूशन इज द गिवन पॉइंट इज द सोल्यूशन और नॉट, तो कभी भी ऐसा ऐसा सिनेरियो मिलता है तो हम बोलते हैं ये तो कंप्लीटली इनवैलिड है. 2 एंड 0 कंप्लीटली डिफरेंट नंबर्स है, ये आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते. ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास 5/7 है और दूसरे साइड में भी न्यूमरेटर में 5 ही है तो डेनोमिनेटर में 7 ही होगा, तभी ये इक्वलिटी साइन वैलिड होगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. अगर न्यूमरेटर वाला डिफरेंट है तो डेनोमिनेटर वाला भी डिफरेंट हो सकता है. गेटिंग इट? एवरीवन गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. ओके, यस आयान, अब्दुल, आर यू गेटिंग इट? मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारे पास दोनों साइड में रेशियोज मिला है AC/AC इज इक्वल टू AC/MC, AC दोनों आपस में इक्वल है न्यूमरेटर पार्ट, तो डेनोमिनेटर भी इक्वल ही होगा. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? यस, अब्दुल, आयान, आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, so from here I am going to write that therefore EC must be equals to MC. Okay, EC and MC दोनों सेम है. EC and MC हमारे फिगर में जो ये जो EC and MC जो दिख रहा है ये दोनों सेम है. दैट मीन्स M यहाँ लाई नहीं कर रहा है. E and M are the same point. Are you getting it? Are you getting it? हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो फिगर है ABC, यहाँ हमारे पास DE था और हमने एक ले लिया. हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि EC का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, और MC का जो लेंथ है दोनों सेम है. क्या ये सेम है फिगर में? नहीं, ये सेम तब होगा, it will only be same when M and E are the same point. Am I making sense? EC and MC will only be same when these 2 points are lying on each other. It is a same point. Are you getting it? Yes. Yes, Okay, we cannot say that this much distance and this much distance are equal. We cannot say. These two will only be same when M and E are sitting on each other, lying on each other. It's a same point. Okay, it is only possible, here we will write, it is only possible, EC and MC same is only possible when M and E are same point. It's a same point, then only this distance, this length will be same.
and if it is a same point, then our assumption that DM is parallel to BC implies that DE is parallel to BC. Yes or no? So can you Are you repeat again? getting it? If this E and M are same point, both lying on each other, both are the same point, then can we say that we have taken the assumption that DM is parallel to BC? That means that DE is parallel to BC. Can we say that? Can we say that? No. Why no? DM is parallel to BC we have taken, right? But Right? parallel is two same lines. No, it's little bit like between It's A and E. it's not a So Aisha. how can DM be? This according to our whatever we have got now, that E and M are the same point. That means this M will come and will sit on E. Okay, that means are you understanding that it will become DM line will become DE line. This will come and will sit on E. Are you understanding? M will come and will sit on E. E and M are the same point. Okay, then our assumption, let's assume that DE dash is parallel to BC, or maybe DM is parallel to BC. That means that this DE is parallel to BC, क्योंकि M और E एक ही पॉइंट है, ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, E और M एक ही पॉइंट है. तो हमारा जो assumption था DM parallel to BC, M के प्लेस पे E भी हम लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा प्रूफ डन. कैन यू सी दैट M and E is the same point? Are you getting it? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि M and E तो सेम ही पॉइंट है और हम assumption क्या लेके स्टार्ट किए थे कि DM is parallel to BC. ये assumption हम स्टार्ट किए थे, ये वाला assumption we have taken this assumption and then we started proving this converse of basic proportionality. Okay, let me write everything over here so that it will make sense to you. We are having a triangle. Here it was given that the ratio A, B, C, D, E. It was given that AD by BD is equals to AE by EC. Okay, it was given and we wanted to show that, to prove that DE is parallel to BC. Now we have taken our assumption and we said that let's assume that DM is parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem, we have written that AD by BD is equals to AM by MC. Okay, equation. Now we did the comparison between the given part and our assumption part, and we ended up getting from 1 and 2, we are getting AB by BD is equal. Okay, here AB by BD is equals to AE by EC. Here the same AB by BD is equals to AM by MC. So both the left side are equal. So we are comparing this two equation. We will be saying that right side will also be equal. Okay. So from here we are getting AE by EC is equals to AM by MC. Right? Right? This much we have done. After that, we added 1 on both sides. I'm writing over here. We added 1 on both sides, which is completely allowed. Mathematically, it is okay to add 1 on both sides. And from here, we ended up getting AE plus EC. Okay.
plus EC by EC is equals to AM plus MC by MC. So basically we are getting AC by EC is equals to AC by MC. And we are saying if the numerator is same, then denominator must be same. Okay. From here we are getting, therefore EC is equals to MC. EC, the length E from E to C, this length, and the length from M to C, these two are equal. Now that is only possible. This is only possible when E and M are same point. Okay. So here we are writing it is only possible when E and M are same point. That means now we have proved that E and M are same point. Okay. Here you can write directly also. Hence E and M are same point. Here till now what we have done, we have proved that E and M are same point. If E and M are same point, then can we say DM parallel to BC? That means that DE parallel to BC. Can we say that if E and M are same point? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, we can say that DM parallel to BC means that DE parallel to BC, and that's what we wanted to show. So we are done with the proof. Everyone getting it? Are Yes. you getting it? Yes. Alvina, Ayan, Abdul, are you getting it? So far we have proved that E and M are same point. That means the assumption which we have taken DM parallel to BC. That means DM parallel to BC implies that DE parallel to BC, and hence we are done with the proof. Is it clear to all of you? It's very simple. ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले जो गिवन है हमने वो लिखा, फिर हमने खुद से कहा कि नहीं नहीं, ये जो लाइन दिया हुआ है DE, ये पैरेलल नहीं है, कोई दूसरा लाइन पैरेलल. ठीक है. उस फिर वो कंडीशन लेने के बाद इजीली हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज किया. जैसे ही हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई किया, हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो गिवन पार्ट है और यहाँ से हमने जो कंडीशन फ्रेम किया, जो इक्वेशन फ्रेम किया, दोनों को हम कंपेयर कर पा रहे हैं. तो हमने कंपेयर कर दिया. कंपेयर करने के बाद हमें जस्ट एक स्टेप और करना है, 1 ऐड करना है बोथ साइड, ताकि न्यूमरेटर हमारा सेम हो जाए. जैसे ही हमने 1 ऐड किया, सिंप्लीफिकेशन किया, हमारा न्यूमरेटर सेम सेम दिख रहा है. तो हम बोल पा रहे हैं कि न्यूमरेटर अगर सेम है तो डेनोमिनेटर सेम होना ही चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी साइन है. ओके, दोनों रेशियोज के बीच में इक्वालिटी साइन है. तो हमने ऐसे डेनोमिनेटर को कंपेयर कर लिया, दोनों आपस में इक्वल होंगे. लेकिन जैसे ही हम फिगर की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है EC और MC ये दोनों तो डिफरेंट डिस्टेंस दिख रहे हैं. यहाँ पे ऐसे कैसे दोनों को सेम हम बता रहे हैं? तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि E and M these are not 2 पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है. दोनों एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं या फिर दोनों सेम पॉइंट है. जैसे ही हमने बोला कि हमने ये प्रूफ कर दिखाया कि दोनों सेम पॉइंट है, वैसे ही हम बोल पा रहे हैं कि DM पैरेलल टू BC का मतलब है DE पैरेलल टू BC, एंड वी आर डन विद द प्रूफ. इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Is it clear, Alvina, Abdul, Ayan? Yes, ma'am. Okay. So the written part and everything you will be getting in your book also. This is how you have to do it. You can write it if you want. Okay. Not that much explanation is required. Just the basic proportionality theorem. Write it properly. Okay. And otherwise all the steps are here. You can note it down, or it's already there in your book. So shall I scroll down or shall I take a pause? Yes. Can we move ahead or you are noting it down?
let's start solving the questions now. So हमने क्या सीखा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या सीखा? अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। दैट्स इट। Okay, let's start solving the question because it is there in your book. In figure 6.18, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB is equals to AN by AD. Let me draw the figure. Okay, here it is given that LM is parallel to CD. Okay, this line LM is parallel to CD. Why it is given? In any question, if you are solving in maths, you know that if any information is given, we must use it. LM is parallel to CB, maybe it is indicating something. Maybe it is indicating that we need to focus on this triangle. Because now only we have done the discussion of basic proportionality theorem and converse of that. So LM parallel to BC, something it is representing. It is indicating something, it is giving us the hint that take a triangle in which LM is parallel to CB. So are you able to understand that we will be taking this ABC triangle? Are you getting it? अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी प्रूफ करना है, इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया? इस चैप्टर में अभी जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स से रिलेटेड होगा। इसमें हमेशा या तो रेशियो इक्वल देगा या फिर लाइन पैरेलल देगा। तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, विच ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है कि LM इज पैरेलल टू CB, दैट मीन्स हम एक ऐसा ट्रायंगल निकालेंगे ढूंढ के यहाँ से जिसमें साइड, जिसमें LM हो एंड CB हो. Then we found that there is a triangle ABC in which one of the side BC is parallel to LM. Yes or no? Let's use the basic proportionality theorem in triangle ABC. LM is parallel to CB. Who will tell me the ratio? By basic proportionality theorem. Who will tell me? कौन से रेशियो आपस में इक्वल होंगे? Who will tell me? Ma'am, AM by AL. AM AM by MB. Oh. AM, Ma'am, ध्यान से देखो. okay. Yes, ध्यान से देखो. I think AM by AL is equals to MB by LC. No, let me show you the basic proportionality theorem का मतलब यही होता है कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, ओके, अगर ये साइड हमारे पास DE है और ये ABC triangle, तो basic proportionality theorem says that if DE is parallel to BC, then AD by BD, ये जो रेशियो होगा इस साइड्स का, ये Yes, ma'am. दूसरी साइड्स के रेशियो के बराबर है. ओके, Yeah.
Okay, same ratio it says the side, the ratio in which side is getting divided, both the ratio will be same. So AM by MB. So from here we are able to say AM is, is equals to AL AL by by L. LC. Okay, ध्यान से रेशियो हम लेंगे, we will not be switching from here to there. Okay, अगर यहाँ AM at first ले रहे हैं तो यहाँ भी दूसरे साइड में AL लेंगे न्यूमरेटर, ध्यान से रेशियो लेंगे. Okay, AM by MP is equals to AL by LC by basic proportionality theorem, right? Equation number 1. What we have to show, we will be looking at it, but not now. सबसे पहले हमें जो समझ में आ रहा है, लेट्स राइट इट. ट्रायंगल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे ही होंगे. जैसे ही हम पैरेलल लाइन देखेंगे वैसे ही हम जल्दी से ट्रायंगल आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर पॉसिबल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करके तब हम सोचेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है. ओके, सिमिलरली अगर दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि ln is parallel to CD, then can you tell me which triangle we will be focusing on? ln is parallel to CD, कौन से ट्रायंगल पे फोकस करें हम? Angle ADC. ट्रायंगल ADC. ओके, नाउ हमारा दूसरा ट्रायंगल है जिसमें दूसरा ट्रायंगल ADC, यहाँ ln is parallel to CD है, यहाँ ln CD के पैरेलल है. लेट्स राइट इट. इन ट्रायंगल ADC, okay, in triangle ADC this ln is parallel to CD, and then we can write the ratio. Please tell me the ratio. Please tell me the ratio. AN by ND is parallel to, is equals to AL by LC. इक्वेशन नंबर 2. इतना तक सबको क्लियर है? अभी भी मैंने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है कि हमें क्या फाइंड करना है. ठीक है, इतना तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब्दुल, आर यू गेटिंग इट? Yes. यहाँ तक क्लियर है अब्दुल? Yes. ओके, नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान से देखते हैं. कुछ मिल रहा है हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से? AM by MB. Yes. AM by MB not there. AL by LC. Can Right we see side the is right equal. side is equal? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का राइट साइड एग्जैक्टली सेम है, और जब भी हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं. सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, व्हाट आर वी गेटिंग? इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे, और इसीलिए अभी तक हमने नहीं देखा है कि हमें प्रूफ क्या करना है. ओके, व्हाट विल बी राइटिंग? विल बी राइटिंग AM by MB is equals to AN by NB. चलो अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना था. तो जो हमने फाइंड करके रखा हुआ है वही हमें यहाँ प्रूव करना है, राइट? इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे. जहां पैरेलल लाइन की बात होगी वहां हमें ट्रायंगल आइडेंटिफाई करके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके कंडीशन, just give it a name and keep it aside, and then think about what can be done after that. If another line is also parallel, then please identify the triangle like this, and you can check in these two cases is there anything which can be taken out as a conclusion, so we can see. I was just about to keep it in hand that AN by MB is equals to AN by ND. हमें ये दो इक्वेशन से मिला, बट जैसे ही हमने चेक किया हमें पता चला यही तो हमने प्रूफ करना था. Is it crystal clear to all of you? Why I have not started with the proof ki let's focus on the proof, we'll be doing the proof? No,
इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे जिसमें हम प्रूफ को बिना देखे ही प्रूफ कर देंगे। आ रहा है समझ में? एवरीवन गेटिंग इट? Yes, ma'am. So yes, I am keeping this much over here. Ma'am, Next can you has tell the how do we parallel. write the conclusion? This one. This Yes, one, for Asha. this, how do we write the conclusion? Yes. We'll be writing the conclusion that in triangle ABC, LM is parallel to CB. Then by basic proportionality theorem, this equation number 1. Okay, in triangle ADC, since LN is parallel to CD, whatever I have written on the screen, Aisha, only this much you have to write. No conclusion is required. Think about it, Aisha. क्या conclusion हम निकालेंगे यहाँ से? Equation 1 and 2 को compare करके हमने जो निकाला, हमें यही तो proof करना है. ध्यान से देखो.